Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. So today who are there? Your Pawan is there, and then Savna, you are there. Who else? You are all busy for your class preparation, I think. Okay. No, sir, I am here. No, you are there, but सर मैं भी वहीं पे. yeah, only two of you are there. So that's what I was thinking, whether you are all busy. మీ క్లాస్ ప్రిపరేషన్ లో బిజీగా ఉన్నారా ఇప్పుడు ఇది చేయడానికి మన యువర్స్ this April exam you will have only questions from optics, modern physics. This static electricity is not there. Okay, so let us see this question number 43. These three questions I had sent it on Friday after the class. क्लास అయిపోయిన తర్వాత क्लास होने के बाद ये तीन क्वेश्चन में भेजा था. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ो. Okay, sir. Sir, a question is that an electron of mass m and charge q is accelerated from Rest. west in a uniform electric field of strength E. The velocity acquired by it as it travels a distance L is. So इलेक्ट्रॉन का मास दिया, चार्ज भी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, then it is moving through a distance of L. Okay, then find the velocity. Okay, कैसे होगा? क्या पवन कुछ आइडिया आ रहा है? सोच रहा हूँ सर. हाँ, देखो 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 देखो. सर क्यू पे फोर्स निकाल करके नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं. फोर्स निकाल, फोर्स कितना है? जो इलेक्ट्रॉन का ऊपर फोर्स कितना होगा? इसका चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फोर्स कितना होगा? सर क्यू ई होगा. यस, फोर्स क्यू ई हो गया. इसका मास दिया है
तो फोर्स दिया, मास सर दिया, यहाँ क्या पे फोर्स ma होता है. एक्सेलरेशन आ जाएगा? यस सर. तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेंथ दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, तो वेलोसिटी निकालो. v square, initial velocity is 0, final velocity is v square. So v square is equal to 2 into acceleration into L, distance. हो गया साहब ना? Yes, sir. मैं कर देता हूँ इसको. देखो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज E and the electric field is E. So this is the force on the electron. So the acceleration on the will be E by m. Okay. So the final velocity is equal to final velocity is v square minus initial 0 is equal to 2L into E by m. So he is telling what is the velocity. Velocity will be root over 2 E L by m. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर ए. हाँ, इसका there is another way also you can do it. The charge is going through a potential difference of this is L length. E is equal to the electric field. So potential difference is equal to EL, potential difference. Okay, potential difference is this much, and the work done is Q into V, potential difference. I have written E here, I have written Q here. Work done this. This work done is will be half mv square. From zero to half mv square. So change in potential energy, a change in kinetic energy is the work done. QEL. So V will be 2QEL by L. Work done, electrical work done is equal to the kinetic energy. The kinetic energy of this is the energy acquired by the electron. When it passes through, it goes through a potential difference of QE over a distance L. Potential difference into distance is work done. Done, sir. और ये दूसरा जो क्या वो आइडिया क्लियर हुआ ना? Yes, sir. Potential difference is electric field into the distance. E into D is the potential difference. Work done is Q into V. So QEL. That work done is its kinetic energy acquired. That is half mv square. Okay. One is the force method. One is the work method. Anyway. So go to the next question.
Yes, sir. पढ़ो. The question is that two parallel infinite line charges plus lambda and minus lambda are placed with the separation distance r in free space. The net electric field exactly midway between the two lines charges is There are two infinite parallel wires with charges lambda per unit length. Line charge lambda मतलब वन एक में लैम्बडा है पर यूनिट लेंथ, दूसरा में माइनस लैम्बडा पर यूनिट लेंथ. The distance between them is r. The net electric field exactly midway between these two line charges. सर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना. फॉर्मूला मालूम है? हाँ. lambda upon 2 pi epsilon naught into r. हम्म. Lambda upon 2 pi epsilon naught into r. लैम्बडा इंटू Lambda upon 2 pi epsilon naught into r. यस सर. क्या है? सर ये जो स्ट्रेट लाइन की इनफिनाइट स्ट्रेट लाइन हाँ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, मेरे ख्याल से यहाँ पे जीरो होना चाहिए ना. हाँ. एक की पॉजिटिव लैम्डा दिया, एक नेगेटिव लैम्डा, तो जीरो कैसे होगा? एक तो सेंटर में इफ यू कीप ए, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. एक वायर इसको अट्रैक्ट करेगा, एक रिपेल करेगा. दोनों अट्रैक्ट करेंगे और दोनों रिपेल करेंगे तो जीरो हो जाएगा. एक सर फिर अट्रैक्ट ऐड करेंगे तो सर फिर बी ऑप्शन आएगा सही. बी ऑप्शन आएगा. ये तो हॉरोस्कोप देख के जो हाथ देख के बताते हैं ना, कुछ लोग हाथ देख के बता देते हैं कब क्या करोगे सब. ये तुम ऐसे ही बोल रहे हो. कैसे बोलो, करो कैसे करोगे बताओ. सर पहले तो प्लस लैम्डा से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो हमारी होगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r बाय 2 होगा बिकॉज मिडवे है तो हाँ करेक्ट. डिस्टेंस होगा वो r बाय 2 हो जाएगा. और फिर माइनस लैम्डा से भी लेंगे सेम थिंग तो सेम वही आएगा. फिर दोनों को ऐड कर दिए. ऐड अच्छा करने के बाद आ जाएगा. ठीक है. आइडिया तो है, बट इसको देयर इज ए अलग मेथड है. इट इज आई विल टेल यू व्हाट यू आर टेलिंग इज ये प्लस, इसमें प्लस लैम्बडा पर लेंथ, इसमें माइनस लैम्बडा पर लेंथ. दिस इज r by 2. So what you are telling, the electric field because of this infinite wire is electric field because of this is, बताओ क्या है? so lambda upon 2 pi epsilon naught into r. 2 2 pi epsilon naught हो जाएगा. एप्सिलॉन r by 2 हो जाएगा. r by 2 है? यस सर. यही है ना? यस सर. ओके. तो ये फॉर्मूला कहाँ से मालूम हुआ? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है ना लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. तो इस वाले केस पे हमें मिड में पता करना है तो जो इसमें जो रेडियस होगा फिर तो वो हाफ हो जाएगा. हाँ. तो इनफाइनाइट वायर का इनफाइनाइट का क्या है? गॉस थ्योरम से हम कर सकते हैं ना जो इनफिनाइट वायर का, तो वो आएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. यहाँ पे r का वैल्यू r बाय 2 है तो इसीलिए यहाँ पे पुट किया. इनफाइनाइट वायर का आ रहा है ये दिस लैम्बडा पर यूनिट लेंथ बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r है. यस सर. अच्छा. चार्ज का
ओके, यू कैन डू दैट, वो उसको भी डिडक्शन करके कर सकते हैं। देन इसका जो फोर्स है इस डायरेक्शन में होगा, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, दोनों मिल जाएंगे। ये जो इफ यू कोई भी पॉजिटिव चार्ज हियर, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों मिलके इंटू 2 हो जाएगा। तो टोटल विल बी 2 लैम्बडा बाई एप्सिलॉन 0 r. This formula you are doing whatever you are doing, you can, I'll tell you how you do it by this formula. We'll get it by Gauss theorem. What you do is you take a cylindrical surface, okay, of length L. Let us take length of the cylinder is L, okay. So the electric field, the flux will be all cylindrical, डब्बा जैसे है, एक डब्बा है, वो वेयर लेंथ एल लेंथ ये डब्बा का अंदर है, ओके। सो जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, सो व्हाट इज द गॉस लॉ इज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू q by ds, epsilon e 0. dot ds, e dot ds ds होगा, yes sir, is q equals by to q by epsilon 0, epsilon 0. ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये because of the wire, it's all in this direction only. In this, it's in all directions. In all directions, it will be like in all directions. So anywhere on the cylinder, the field will be same. So EDS is equal to area of the cylinder, or there will be no electric field in these surfaces. Here there will be no electric field. So E into surface क्या है? Pi E into pi, ये distance r/2 square into L, ये है ना? मैं सॉरी 2 pi r E into इसका जो surface is 2 pi r/2 into L is equal to total charge enclosed. Total charge is lambda into L by epsilon 0. So E will be lambda by pi epsilon 0 r. Yeah, देखो, how to find the formula. You can for infinite wire, you can take a distance r/2 or whatever, and take one small length, find the electric field, then its का component in 2 directions. ये कंपोनेंट रहेगा, ये कंपोनेंट इसका दोनों साइड में, ये कंपोनेंट कैंसिल कर जाएगा. देन यू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to -infinity to +infinity, you will get E, you can find out E. That is one way, but the easiest way is this one. I'll do it again for your clarity. देखो एक वायर ऐसा है, इसमें प्लस लैम्बडा और यूनिट लेंथ है. Now you want to find out electric field at a distance, suppose let us say r. Okay, so you take a cylindrical surface of radius r and length, let us take length L. Okay, then the total flux coming out of this cylindrical surface समझ रहे हो ना? जो एक डब्बा होता है, डब्बा का ऊपर कवर नहीं है, नीचे भी कवर नहीं है. Okay, so this is then total flux going out, total flux is E dot ds equal to total charge enclosed. Charge enclosed will be lambda, ये length L है, so lambda into L by epsilon 0. Lambda L is total charge by epsilon 0. Okay, now the electric field you want to find out, E is only coming radially from this point, it will come out radially. There will be no electric field going out this side, this surface and this surface. Only it will come out from these two surfaces, from this circular surface, round surface. तो ये इसका एरिया जो सिलेंडर का साइड का सरफेस क्या है? 2 pi r into L. This is the surface area of the cylinder. Surface area of the cylinder. That is equal to lambda
L by epsilon 0. L काट दिया. So E will be lambda by 2 pi epsilon 0 r. So here in this case your r is r by 2. So एक आ गया और दूसरा कभी करके. हो गया. Yes, sir. वो गॉस लॉ मेथड क्लियर हुआ. Yes, sir. Yes, sir. So that is a easier method for finding out for an infinite wire. If an wire is infinite, then to find out electric field at any point at a distance by using Gauss law, you can do it. The other method is also by using electric field and taking the cos theta component, as you are rightly telling, cos theta component करके भी कर सकते हैं. Okay. Okay, then next problem. पवन पढ़ो. Yes, sir. पढ़ रहा हूँ. 2 point charges minus q and plus q by 2 are situated at the origin and at the point a comma 0 comma 0 respectively. The point along the x-axis where electric field vanishes is. सर इसमें ये दे रखा है ना कि माइनस क्यू जो है वो वर्टिसिस पे है और जो q by 2 है वो x एक्सिस पे है, तो उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया a. आप पूछ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, तो सर वो बीच में होगा. बीच कैसे होगा? अब बीच में होगा. बीच मतलब पूरा एग्जैक्ट हाफ हुए नहीं होगा ना. नहीं, हाफ एग्जैक्ट हाफ नहीं, वो अभी निकाल सकते हैं उससे. तो मतलब बीच में सेंटर में ही कहीं होगा या फिर उसके पास में q by 2 के पास में होगा कहीं. Yes, sir. X axis पे ही इंडिकेट कर दो. देखो करके आंसर मिल रहा है. सर करके देख रहा हूँ अभी. सर ऑप्शन डी होगा, a √2 upon 1 plus √2, सॉरी √2 plus 1 x. डी हुआ है. यस सर. देखते हैं. क्या देखो, ट्राई करता हूँ क्या है. देखो सर सही है कि गलत है मेरा?
मैं देख ये जो बुक में जो आंसर देता है आई डोंट गो बाय दैट, लेट मी सी। ये इसमें क्या है, ये प्लस क्यू है, क्यू माइनस क्यू क्या है, माइनस क्यू एंड क्यू बाई टू, माइनस क्यू, ये सर माइनस क्यू है, दिस इज माइनस क्यू क्यू बाई टू है। एंड दिस इज यस सर, प्लस क्यू बाई टू है। तो माइनस क्यू ओरिजिन पे और ये माइनस क्यू ना, ये Yes. माइनस क्यू 0 0 में ओरिजिन में है, ये क्यू क्यू बाई प्लस क्यू बाई टू ए में है। A00. So minus q, the point minus q and q are situated at the origin and the point A00. ये correct, ये correct है. Okay, so let us at a distance x from here. The field is the field vanishes. Okay, now then what you will have, minus q by 4 pi epsilon 0. I am leaving it. Q by x square is equal to q by 2 a minus x square should be equal. 0 minus plus this 0. So this is equal to this. Okay. यही है ना? So x square will be 2a minus x square. C option होगा root Okay, 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 okay. देखते हैं 2a square plus x square minus 2ax. तो ये क्या हुआ ना, x square minus 4ax plus 2a square is equal to 0. देखो ठीक है, q बाई एक्स स्क्वायर जो फोर्स है, ये q बाई 2 बाई a माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर विल बी 2a माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a स्क्वायर, तो x विल बी minus a minus b plus minus b square 16a square minus 4ac 8a square by 2. This is 2. Okay, I am writing 4a plus 8a square. 8a square means 2 into root 2a by 2 plus minus. So this will be a 2a plus minus root 2a. 2 plus भूल कहाँ हुआ? सर यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो होता है, हाँ? एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, x इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट ओवर q2 अपॉन q1 प्लस 1। अगर सेंटर में कहीं होगा तो, अगर साइड में होगा तो वहां पे माइनस 1 करते हैं, तो इस हाँ फॉर्मूले करेक्ट है, से किंतु ये तो 2 प्लस रूट 2 बाई रूट 2 माइनस ए, ये हो गया क्या ना, हमने ले लिया रूट 2 1 प्लस रूट 2, अच्छा ये रूट 2 प्लस माइनस 1, ये हो गया। आंसर कहाँ नहीं हो रहा है? कहाँ भूल के हम? लेट मी सी अगेन। सर एक बार वो वाला फॉर्मूला लगा के देख लीजिए जो मैं नहीं आप अभी बता रहा हूँ। ऐसे करते हैं, ये तो इसमें तो कोई भूल नहीं है ना, ये जो फोर्स ड्यू टू दिस माइनस क्यू, सो क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर should be equal to q by 2 by
a minus x square, ये तो किए थे। इसमें क्या भूल है क्या? q by x square 1/4 q by x square is equal to x माइनस ए का होल स्क्वायर होना चाहिए ना? हाँ, a minus x whole square, x minus a minus x same. This distance is a minus x. Okay, so I'll make it ये 2 इधर आ गया, so that means x square is equal to 2 a square plus x square minus 2ax. That makes it same x square plus 4ax plus 2a square. ये तो ठीक है, तो x should be equal to 4a 2a square है, x is equal to 4a plus minus b square 16a square minus 4ac 8a square by 2. This is equal to 2a plus minus root 2a. This is 8a square is equal to 2 into root 2. 2 कट्टे हो गया. So 2 plus minus root 2a. ये जो एक प्लस जो माइनस है इधर आएगा, प्लस होगा तो इधर आएगा. 2 minus root 2 means 2x. This is x. 2 minus root 2 means 2 minus 1.414. So that means roughly 0.6. ये distance 0.6 and this is roughly 0.4. सर वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी नहीं निकालना था उसमें तो. नहीं, no, your answer इतना ही रहेगा. I'm just trying to see that whether it is this is Okay, sir. ये जो डिस्टेंस ये निकलेगा. you have to only take it here, but आंसर में ये जो अल्टरनेटिव्स दिए है ना आपका बुक में, उसमें नहीं है. सर मैंने जो निकाला वो है, वो ऑप्शन डी में आ रहा है, a रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2 और रूट 2 प्लस 1. ओके वेट इसको हम करते हैं. ये आया, इधर आ गया. आई एम टेकिंग इट रूट टू प्लस 1. सर आपने जो वहाँ पे q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाई 2 अपॉन 2 लिखा है क्या इनटू में वहाँ पे? देखो रूट 2 माइनस ये प्लस माइनस. देखो रूट 2 माइनस क्या, सपोज आई टेक इट प्लस, देन रूट 2 माइनस 1 हियर कर दिया, ये हो गया 1. सो रूट 2 a बाई रूट 2 माइनस 1. जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसको प्लस लेने से ये ऑप्शन आ रहा है. इफ यू टेक माइनस, विल गो टू द अदर पेज. हमारा क्या आंसर आ गया? ये रूट टू प्लस माइनस 1 ये आ गया. सो इफ आई टेक द प्लस ऑप्शन रूट टू प्लस 1 a, then I multiplied by root 2 minus 1 into root 2 minus 1. So this becomes root 2 a by root 2 minus 1. ये answer C. This is given C. Okay. और सर माइनस लेंगे तो? No, if I take minus, let me take root 2 minus 1 a, then I will multiply by root 2 plus 1. Root 2 plus 1. So this will be root 2 a by root 2 plus 1. This is option D. Yes sir. This is option D. So both are correct. ये correct है. एक तो है जिसमें this is inside, ये D option is minus. So ये this is between the places somewhere between. ये सर उन दोनों के बीच में होगा चार्जेस के. और जो ये ऑप्शन है ये इधर आएगा. So C and D both options are correct.
किताब में आंसर सी करेक्ट दिया है, बट बोथ आर करेक्ट. सी एंड डी बोथ आर करेक्ट. The point joining the x-axis where the electric field vanishes is, both are correct. It is not given the point in between the 2 points where it will vanish. ante सर एक then बार बैक स्लाइड प्रीवियस you स्लाइड will be correct. दिखाइए ना. Huh? प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना एक बार. प्रीवियस स्लाइड. Previous slide you want to see. सर हम यहाँ पे भी तो डायरेक्ट ढूंढ सकते थे. वहां पे जो q अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाई 2 अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है. ये सर लेफ्ट साइड आपके हाँ ऊपर में q हाँ अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाई 2. हाँ सर ये वाला. सर यहाँ पे डायरेक्ट ढूंढ सकते थे. q बाई 2 को नीचे लेकर के एक्स हाँ स्क्वायर उधर चला जाएगा. x अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा वहां पे. हाँ. तो वहां से q बाई 2 जब नीचे जाएगा तो q से q कैंसल 2 आ जाएगा वहां पे. वही कहीं किया ना, वही तो रूट 2 तो सर उससे भी यही फॉर्मूला यही आ रहा है. x इंटू रूट टू a अपॉन 1 प्लस रूट 2. क्या दो ऑप्शन आएगा, प्लस माइनस रहेगा तो यू विल गेट 2 ऑप्शंस. यस सर. और इसमें ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने से प्लस माइनस नहीं आ रहा, सिर्फ प्लस वाला आ रहा है. क्यों? It has to come 2 options. So you जो भी करोगे, suppose what you cannot take out the squares like this. You cannot take out the squares. यहाँ √2 रख के, so you what you are telling I am, तो इसको √2 रख के you are doing x √2 a minus x. That is not correct because you have to put plus minus. सर वहां पे ये नहीं लिख सकते x अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर हो रहा है. तो x अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख तो सकते हैं ना. क्या लिख सकते हो बताओ? x q. एक मिनट आप वो लिख लीजिए पहले. q अपॉन एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन है, हाँ जहाँ पे वो था q अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाई 2 a minus x square. Okay. यस So सर. you are telling x will be √2 a minus x. यही बोल रहे हो? नो सर. सर एक बार उसको एक्स स्क्वायर को राइट साइड लेके चले, राइट साइड करिए ना. एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर आएगा. x square एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर. तो हाँ सर हम इसको पूरा वो लिख सकते हैं ना, a एक्स अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर. हाँ क्या है? एक्स अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू और इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. वहां पे q बाई 2 को उधर भेजेंगे. किसका स्क्वायर? प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. ये अपने यहाँ पे Take प्लस plus. माइनस रूट 2. ओके सर. You cannot take only plus, you have to take 2. ओके सर. You will get 2 answers because there are 2 answers. एक तो दोनों चार्ज का between the 2 charges, the other is outside the 2 charges. There will be two answers. ओके सर. हो गया? Yes, sir. सर. Then you go to the next question, next page, जो 46 से शुरू होता है उसको देखो. सर सर जो आपने पुराना भेजा था वो वाला ना. और these 3 प्रॉब्लम से जो दूसरा पेज में छोड़ा था, इसमें ये 3 प्रॉब्लम मेरे को लगा कि ये थोड़ा करना चाहिए तो इसलिए रखा. तो देखो 46 पुराना प्रॉब्लम 46 पढ़ूं.
The electric uh, the electric intensity outside a charged sphere of radius r at a distance r where r is greater than capital R is. हो जाएगा. ये सर यहाँ पे वो वाला केस होगा ना जब आर बाहर कोई पॉइंट लेते हो किसी स्फीयर का, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना. अभी कर रहा Small r हूँ 2 के at मिनट. a distance small r, what is the potential will be, what will be the electric field? इंटेंसिटी. हाँ, 1, तो 1/4 pi epsilon 0 q by small r square, and q is कौन सा तुमको करेक्ट लग रहा है? करके देखो. Here actually the question is not given full. Actually the question is not given full. He should have also written sigma is the surface charge density on the sphere. That यस is सर, वहाँ पे सिग्मा dq/ds होता है ना. so that means q will be 4 pi capital R square into sigma. कौन सा करेक्ट आ रहा है? Sir, option A. ये Yes, sir. इलेक्ट्रिक Electric फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 pi epsilon 0 q by small r square, and Yes, sir. वो जो क्या Sir, q है, इट इज 4 pi capital R square into sigma. yes, 4 sir. pi, 4 pi ऊपर नीचे 4 pi चला जाएगा, तो सिग्मा कैपिटल R square by epsilon 0 small r square. हो गया पवन? यस सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. Read करूँ sir. The question is that the ionization potential of mercury is 49 volt. How far an electron must travel in an electric field of 1.5 into 10 to the power 6 volt per meter to gain sufficient energy to ionize mercury? सर इसका ऑप्शन डी होना चाहिए. बी.
how far an electron must travel in an electric field? Yes, sir, du. सर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, E इक्वल्स टू वी बाई डी। क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो E इज इक्वल्स टू वी बाई डी यूज करेंगे ना। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी V बाई ई। तो V दिया हुआ है और E दिया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे तो पूरा सॉल्व करके दिया नहीं है, ऐसे ही वैल्यू बताना है पुट करके बस। तो कौन सा ठीक है? सर D होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। हाँ, देखो इसको कितना, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरी इज 10.39 V। मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन को इतना जो इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बेसिकली with this energy the electron will be taken out. So this will be 10 into 39 electron volt. Okay, so that is equal to the energy that has to be gained by going through the potential electric field into distance should be that much of volt. ये volt में है, ये भी volt में कर दो। तो 10.39 volt is equal to 1.5 into 10 to the power 6 into x or d, whatever distance. So that will only that will give you 10.39 by 1.5 10 to the power 6 meters. Okay. ये इसका जो एनर्जी you require 10.39 electron volt energy you require. So that you will get from one electron, that Q into V. Q is E, V is given 1.5 10 to the power 6 volt per meter into X. This is the total energy. This is Q into IV. This is electric field, sorry. QE(X), electric field. This is QE into X. X is the distance, and E is the electric field into that whatever the charge. So that gives you, you can take it. So X will be 10.39 by 1.5 10 to the power 6. This much meter. So D should be correct answer. $47, yeah. ये हाइड्रोजन आयोजन एनर्जी is 13.6 electron volt. Hydrogen has only one electron, so you have to, its energy in this orbit is minus 13.6 electron volt. So if you have to give energy 13.6 electron volt, then it will go away to infinity. Similarly, in this mercury, if the outermost electron, ionization means outermost electron, mercury में there may be, unlike hydrogen, उसमें ज़्यादा electrons हो सकता है. So last orbit में whatever electron will be there, to ionize it, you require this much of energy, EV, electron volt. That electron volt has to be given by a charge. Charge मतलब same charge, by moving in what distance in this electric field. E into E is the voltage into this distance. This gives you actually the
that gives you the energy, that energy to that charge. So charge into E into X. This is the energy. If the charge Q moves in an electric field over a distance X, then total energy is this. This energy is equal to this energy. So this Q is, you cut that electron, one electron. So E will be, X will be this by E. So this is in volt, this is in volt by meter, E is volt by meter. So what will happen is, in meter will be, the dimensional, if you see, this becomes this meter. Oh yeah, na 10.39 volt by distance is equal to, this is V by M. E, whatever E is given 1.5 into 10 to the power 6 volt by meter. So you have volt, here volt by meter. So finally X becomes in meter, this meter. So E is volt by meter. So this side is V, then you get distance in meter. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. वो कुछ नहीं है. This is basically from dimension itself. You will know if you read the question. One is given by V, one is given by V by meter. तो V by meter को X में multiply करो मीटर में. So दोनों साइड इक्वल हो जाएगा डायमेंशनली. So then X का वैल्यू निकाल लो. Okay. Yes, sir. I have taken to the origin. Actually, it is not volt. The ionization potential of this is so volt. Once that is that much of electron volt is required to take the electron. So you multiply E electron volt. That much of electron volt energy is required. That electron volt you will get by taking another electron in that electric field into that distance. But if you see only without understanding the problem, also dimensionally you can do. One is in volt, one is in voltmeter. So voltmeter को x multiply कर दो, that is in meter. So that ये volt के ये volt हो गया dimensionally. अच्छा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 48 सिंपल बोल दो क्या? सर उसका आंसर तो डी होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r³ होता है और पोटेंशियल में 1/r. Electric field and potential for dipole is varies as d r³ and 1r². है? Yes, sir. Okay. Okay, next question. Next question, Sabna. Yes, sir. Hmm. The question is that an electric field of moment T is placed in a uniform electric field E, then नहीं, उसका पहले है ना एक 49. is 48 हो गया. 49 भी कुछ नहीं है, हो जाएगा. 1 मिनट. हाँ. yes, Sir. yes, sir. हाँ. पवन पढ़ो. सर क्वेश्चन नंबर 49. हाँ. 49 है ये रहा. The electric dipole moment of an electron and a proton 4.3 nanometer apart is. कैसे करोगे? सिंपल. डाइपोल मोमेंट. सर वो Q/2 2a वाला यूज करके. हाँ. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो फॉर्मूला की Q/2a वाला यूज.
कौन सा फॉर्मूला? नहीं, ये डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, सिंपल प्रॉब्लम। डाइपोल मोमेंट कितना है? एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। सर P is फॉर्मेट है। equals to Q into 2A वाला फॉर्मूला यूज करना है ना? हाँ, दिस इज ओनली चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। यस चार्ज सर। मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। यस सर। हाँ, तो चार्ज है क्या? चार्ज इज 1.6 10 to the power 19 -19 एंड ये 4.3 नैनोमीटर है, तो 4.3 10 to the power -9। 9। यस सर। तो कौन सा आंसर ठीक होगा? 10 to Sir, the power option first will be right. हाँ, 19 -10 to -9 -28 and it is 1.6 into 4.3। so कौन सा? A। Yes, sir. ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। जो डाइपोल मोमेंट इज P is equal to M into here Q into distance 2L, whatever you tell, Q into 2L or Q into L. So this charge into distance, that is dipole moment. ऑप्शन यही आएगा। 6.78 आ रहा है उसमें, 6.8 है। हाँ, वही अप्रोक्सीमेटली दिया है। हाँ, यस सर। एक तो फास्ट तो 10.28 में हो गया खत्म। 10 to the power -28 और तो कहाँ नहीं है 28। यस सर। नेक्स्ट। पढ़ो। Yes, sir. The question is that an electric field of movement P is placed in a uniform electric field E, then option भी पढ़ना है सर। बताओ कौन सा ठीक ठाक है। तो इलेक्ट्रिक द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज P क्रॉस E, ये ठीक है भूल है? सर राइट है, करेक्ट है। वन करेक्ट, P वन इज sin करेक्ट। थीटा होता है ना? P क्रॉस E, टॉर्क इज P क्रॉस E, करेक्ट, यस ठीक है। सर। तो उसको बिना पोटेंशियल वेक्टर एनर्जी फॉर्म ऑफ द में। सिस्टम इज P डॉट E, ठीक है। नो सर। नो सर, ये गलत लग रहा है, शायद ही गलत है, पता नहीं। इसमें डॉट और इसमें भी शायद P क्रॉस E ही होता है। P sin थीटा ही होता है। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? P डॉट E, बट इट इज माइनस P डॉट E। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस P डॉट E, ओके। यस सर। और तीसरा तो सही है। तीसरा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0, क्या? अगर यूनिफॉर्म तो 3 is correct or not? सर करेक्ट होगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो। हाँ, there are resultant forces on the dipole. Dipole में resultant force is actually there is a torque, but the force are in opposite direction, so resultant force is 0, but there is यस a सर। torque. Okay. जैसे टॉर्क होता है उसमें। यस सर। So force is 0. So 1 is correct, 3 is correct. So which option is correct? सर ऑप्शन डी। B. B correct ना? यस सर, ऑप्शन बी। हाँ, 1 is correct, 3 is correct, 2 is actually minus छोड़ दिया। Potential energy is actually minus P. Okay. ये पोटेंशियल एनर्जी एंड द टॉर्क इसका रिलेशन मालूम है किसे?
just do it 1 minute. सर शायद ये होता है ना, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो टॉर्क मिनिमम। देखो या टॉर्क, देखो टॉर्क है ना, टॉर्क इज P क्रॉस E, that is P E sin theta. Okay, this is like a, this is the dipole, this is the electric field. Electric field, this is kept like this. So the torque will be basically ये इधर ऐसे force है, ये force है, ये जो torque है, ये this force, this force into this distance. So this angle theta comes. So this will be PE sin theta. This is sin theta, 2L sin theta, and the force is actually force is QE into 2L sin theta. That is Q2L is P E sin theta. Okay, so if you turn it by another angle, small angle d theta, so work done will be, work done is equal to tau d theta. Okay, that will give issue P E sin theta d theta. This is P E sin theta ka integration is minus cos theta. So this is basically P dot E minus P dot E. For a particular theta, to, if you want to really work out this which angle to which angle, then you will get the work. Suppose theta 1 to theta 2, what is the work done? But the general formula is minus P E cos theta is P dot E. P minus rahega. So potential energy is equal to minus P dot E. Why that option 2 is wrong? Just to show that I did it. Torque is P cross E, but from there you find out potential energy minus P dot E. In linear motion, force into distance is work. In rotational motion, torque into angle d theta. Torque into angle is the work done. Done, sir. Okay. Next question. पढ़ूं? Let EA be the electric field due to a dipole in its axial plane distance at distance L, and let EQ be the field in the equatorial plane at distance L. Then the relation between EA and EQ will be. सर इसका ऑप्शन सी होना चाहिए. कौन सा ऑप्शन? EA is equals to 2 into EQ. Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C option. सर क्योंकि यहाँ पे एक्सियल में वो होता है ना KP by R cube, और इक्वेटोरियल में हो जाता है 2 into KP by R cube. यस, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? C. हाँ ठीक है, चलो ये सिंपल, इसमें कोई ये नहीं है, ये जो जनरल फार्मूला ये इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P by R Q, 2P by R Q, and
this is along the median, it is P by RQ. Okay. Similarly, for a magnet, it will be mu 0 by 4 pi, m by 2m by RQ, and mu 0 by 4 pi, m by RQ. Okay. M is the magnetic moment of the dipole. Here, electric moment of the dipole is P, their magnetic dipole moment is P. Here 1 by 4 pi epsilon 0, there mu 0 by 4 pi. Okay. Yes, sir. Next. पढ़ो. Okay, sir. So the question is that a ball of mass 1 gram and charge 10 to the power minus 8 coulomb moves from a point A where potential is 600 volt to the point B where potential is 0. Velocity of the ball at the point B is 20 centimeter per second. The velocity of the ball at the point A will be तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना इसमें 1/2 mv². तो जो v² होगा पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी तक. तो पोटेंशियल लाइक 1/2 m v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर लेंगे. देन इज इक्वल टू में हम क्यू वी रखेंगे और वहां पे भी जो वी होगा हमारा वो पोटेंशियल होगा ए और बी पे. तो जो पोटेंशियल हमारा गिवन है, जो पोटेंशियल बी पे जो गिवन है वो 600 है. बी पे ही है ना, फिर ए पे 2 मिनट. ए पे है वो 600 वोल्ट, बी पे 0 वोल्ट है. तो बी पे 0 हो जाएगा. तो उसको सॉल्व करने पे आएगा फिर.
सॉल्व करने से आएगा। 2 ओके, मिनट से start कर गए। तो फर्स्ट थिंग इज देखो, इट इज मूविंग फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना? ये कहाँ है? ये पॉइंट ए इज एट ए पोटेंशियल 600 वोल्ट, Yes, B sir. is B is at a zero potential, so it is moving from A to B. तो कहाँ ये हायर पोटेंशियल से लोअर को जा रहा है, लोअर से हायर को जा रहा है? Sir, higher to lower जा रहा है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो मतलब इसका अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है? हायर टू लोअर और लोअर टू हायर? सर हायर से लोअर नहीं, लोअर से हायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल direction of the electric field is always from the higher potential to the lower potential. Okay, direction of a current is the direction of the electric field. करंट कहाँ जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव. Electrons move from negative to positive, but the current goes from positive pole to negative pole. So always remember that the electric field direction is from higher potential to lower potential. Same thing is gravitational field is from always direction of the gravitational field is from higher potential to lower potential, है ना? ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन क्या है? घर का ऊपर से, घर का छत का ऊपर से नीचे तक, ये पेड़ का ऊपर से नीचे, तो एप्पल कैसे गिरा? न्यूटन का एप्पल कैसे गिरा? इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड. तो इन द फील्ड कहाँ होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. पोटेंशियल का पेड़ का ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होता है, नीचे कम होता है पोटेंशियल. तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो. समझ में आया? Yes, sir. सर फिर ये तो सही हुआ ना कि पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है? नहीं, वो सर इलेक्ट्रिक ऐसा पोटेंशियल क्या है? व्हेन you do the work, this is the direction of the you external force does a work against the potential, then work is done. If you are trying to do in the direction of the potential, then you are not doing work. जैसे आप पत्थर ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, काम नहीं कर रहे हो. और if you are carrying a stone from down below, then the stone itself, the gravitational field is doing the work. You are doing negative work. But आप पत्थर उठा के ऊपर नीचे से ऊपर ले रहे हो, then you are doing work. When you are doing work against the field, then external force is doing work. तो यहाँ क्या हो रहा है ना? This charge is actually going from higher potential to lower potential. If it is a positive charge, it is going from higher potential to lower potential. That means it is gaining energy. It is gaining energy. It is gaining velocity. Okay. So then you make the calculation. क्या है ना? This change in potential energy, that is charge into potential, is equal to the change in the kinetic energy. जो kinetic energy होगा, because the charge is moving in the direction of the field, so its velocity will go on increasing. समझ में आया? Yes, sir. देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. Okay, this is always from higher potential to lower potential. It is always electric field is like current, positive to negative, higher potential to lower potential. Okay, always the battery का positive is always higher potential, negative is at lower potential. So higher potential to lower potential is the electric field. So if a positive charge is going, then it is gaining. If it is starting from zero, it will gain velocity because it is gaining energy. But if you put a negative charge, then in this electric field, then your velocity will decrease. The minus q
the force on this will be minus q. If you are positive charge, the force on it plus eq. So this will have an acceleration like this, so its velocity will increase. But if you put a minus q, so if it is stationary here, it will move in this direction, or if it is moving in this direction, its velocity will decrease. If it is negative charge. Okay, so q, if you are putting a positive charge, there will be a force QE by m. So the force is positive, so this will move with acceleration. If it is negative, it will move with a negative acceleration. That means its velocity will reduce, or if it is at rest, it will move in this direction. Okay. So now in this case, you tell me what is the potential energy, what is the gain of energy? Is 600 volt into charge is 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 688. Yes, sir. 600 volt, है ना? 600 volt into 10 to the power minus 8 coulomb. This is the work done. This work done, इसका will be final energy, final mv square minus mu square. Okay. So this is actually half mass is given. The ball of mass 1 gram. 1 gram is there. 10 to the power minus 3 v square minus इसका दिया है 20 centimeter. 20 centimeter means 20 into 10 to the power minus 2 square. यही हुआ ना? So this you take it 2 into 600 into 10 to the power minus 8 into 10 to the power 3 is equal to v square minus 2 into 10 to the power minus 1 square. Okay. So that makes you 10 to the 12 into 10 to the power minus 3 is equal to v square minus 4 into 10 to the power minus 2. So v square is equal to 1.2 into 10 to the power minus 2 plus 4 into 10 to the power minus 2. This is 5.2 10 to the power minus 2. So V will be 5 to 2 into 10 to the power minus 2, sorry, minus 1 meter. Okay. So 5.2 is how much? It will be around 2.4 means 569. 23 means 569. 5.2 is 22 into is 22 into 2. 22 into 3, 23, 23 is 529. Something 2 point something 2.2 something of root over 5.2. How much? This is 5.2 is how much? Root over 5.2. आपका जो कंप्यूटर से ये जो इसमें देखो क्या है, कैलकुलेटर में देखो 2.28 something. 2.28, huh? Okay, 2.28. So 2.28
into 10 to the power minus 1 or 22.8 centimeter. Okay. Yes sir, ये है option में. Option में है, but he has given answer. The other answer, that is, it is given answer, correct answer as 16.8. But ये correct नहीं है. 16.8 is not correct. This is correct. 22.8 is correct. Okay. When a positive charge is placed in a electric field, its velocity will increase. क्योंकि ये देखो, ये हो गया. 2 मिनट सर. हो गया ना? 2 मिनट. अच्छा, ओके. Done, sir. Done. Okay. Yes sir, हटा दीजिए. So what I was telling is, this while starting from A, it has 20 centimeters per second was the velocity, and you are putting it in a electric field E, and this charge is given positive charge. ये तो negative लिखा नहीं ना, positive लिखा. Charge this much, that means positive charge. You have to take it positive charge. Once you are taking positive charge, there in the direction, the field is actually from in this direction, because it is higher voltage, high voltage to low voltage. That is the direction of the field. So you know the direction of the field, and you know this is Q. So naturally this force will be QE. That is, there is a force, positive force in this direction, so it will move with acceleration. That means its velocity will increase. So it is 20 centimeter, the velocity will increase and it will become 22 point whatever 8. It will not be 16 point whatever. Okay. High to low voltage means it is more positive to negative. So when you are putting a positive charge, it will definitely move with acceleration in this direction. It came in the All India Institute of Medical Science का एग्जाम में आया था 2010 में. AIMS used to those days have separate examination. That way every state used to have their separate exam, or All India Institute of Medical Science used to have separate exam. हो गया? Yes sir. यहीं खत्म करना है, करेंगे और एक दो प्रॉब्लम करना है. खत्म कर दो, एक्चुअली 6 बजे टेस्ट है. अच्छा ठीक है चलो. तो वहीं 52 में खत्म कर दिया. ये 53 तो कर दो ना. 53 में कुछ नहीं है. ओके सर. The electrostatic potential of a uniform charged thin spherical shell of charge Q and radius R at a distance R from the center 1/4 pi K epsilon 0 for points outside and Q by for points inside the cell. कौन सा correct है? Electrostatic potential at a uniformly charged thin spherical shell of charge Q and radius capital R. जी अगर हम स्फेरिकल के सेंटर में बात करें तो वो कांस्टेंट होता है और उसके बाद डिक्रीज करता है. करेक्ट. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर बोला क्या?
कौन सा करेक्ट आंसर पवन? सर ऑप्शन बी होना चाहिए। बी? अरे सब थ्योरी बताने के बाद बी कैसे हो गया? सर ऑप्शन ए। हाँ ये सर ऑप्शन ए होगा, ए होगा, यस सर। सर ये अगर बाहर का लेंगे तो स्मॉल आर डालेंगे, और अगर अंदर का लेंगे तो अंदर का तो कैपिटल है, आर अंदर का जहां भी लो, सेंटर भी लो, सेंटर में लो, जहां भी लो, वो जो सरफेस में जो है वो अंदर में सब जगह वही है, ये पोटेंशियल का है। और जो फील्ड का है, अंदर जीरो, बाहर वेरी जज 1/r। यस सर। चलो ठीक है, ओके सर वो बाय। गलती से वो बोल दिया आप नहीं बी। नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जब ये देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन पड़ेगा ना, 1-2% तो तुम्हारा ऐसे ही मालूम होगा क्वेश्चन, फिर भूल करके आओगे। ये एग्जाम में वही होता है। पूरा आपको 100 क्वेश्चन पूरा देंगे तो 100 को पूरा आपको सब मालूम होगा, फिर भी 1-2 भूल हो जाएगा। मालूम हो के भी ये जो सिलेक्शन कर ए को बी हो जाएगा जल्दी से, इतना कैलकुलेशन ये करना वो करने के टाइम पे क्या होता है ना, 1-2 क्वेश्चन आप सोचेंगे बी, मारेंगे ए में, वो प्रॉब्लम तो होगा, सबका होता है। तो दैट्स वाई कंसंट्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड इसको एग्जाम का डे का जो एग्जाम का पहले ज़्यादा एग्जॉट नहीं करना, ज़्यादा पढ़ना नहीं, जो हो गया। पहला एग्जाम का पहला दिन कुछ भी पढ़ना नहीं, पूरा फ्री माइंड में एग्जाम को जाना, कूल माइंड में जाना। तब वो क्या होता है ना, आपको ये यू गेट एडवांटेज ऑफ 2-3 मिस्टेक्स यू विल नॉट कमिट। चलो तो ये बाकी कर लो। यस सर। ओके सर। 54 से 60, इसके बाद 76 से 76 से शुरू होगा, तो 2 पेज कर लो। 54 से 89 तक। ओके ओके सर। कर लो। कल करेंगे या टाइम चाहिए, परसों करेंगे? कर लेंगे सर कल तो। कल कर लेंगे सर। ओके कल करेंगे। तो कल के लिए थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा दे के इसको थोड़ा क्वेश्चन देख लो पहले। ओके ओके सर। ठीक है, बाय थैंक यू बाय। सर, बाय सर। बाय, थैंक यू।